Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमरीश जी। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद है गौरव धवनलाल। Thank you, Amrish, and Vishal, welcome to the program. Thank you, Gaurav. A quick look at the headlines. Domestic benchmark indices continue their upward momentum for second consecutive session. Sensex surges over 900 points. Nifty closes above 24,480. Union Cabinet approves infusion of equity of 10,700 crore rupees in Food Corporation of India. Also approves PM Vidya Lakshmi scheme to provide financial support to meritorious students. And global crude oil prices decline. Brent crude and WTI slip over 1% each. घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन बढ़त का दौर जारी रहा। सेंसेक्स 900 से अधिक अंक बढ़ा। निफ्टी भी बढ़कर 24,480 अंकों के ऊपर पहुंचा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 रुपए की इक्विटी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को भी मंजूर किया और कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई के मूल्य 1% से अधिक गिरे। और आज की पहली खबर, दुनिया के बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन बढ़त का दौर जारी रहा। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 901 अंक यानी 1.13% बढ़कर 80,378 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 271 अंक यानी 1.12% बढ़कर 24,484 अंकों पर जा पहुंचा। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी आज तेजी का क्रम बना रहा। मिड कैप सूचकांक में 2.2% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 2% की बढ़त दर्ज की गई। Domestic benchmark indices today continued their upward momentum for the second consecutive session amid positive global cues. The 30-share BSE Sensex surged 901 points or 1.13% to close at 80,378, while the NSE Nifty 50 added 271 points or 1.12% to settle at 24,484. The broader market at the Bombay Stock Exchange also ended in positive territory. The mid-cap index climbed over 2.2% and the small-cap index gained nearly 2%. In the Sensex index, 25 out of 30 companies logged gains. In the top gainers, TCS surged 4.2%, Infosys gained 4% and Tech Mahindra added over 3.8%. Conversely, in the laggards, Titan dropped more than 1.5%, IndusInd Bank slipped over 1% and Hindustan Unilever lost 0.8%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors ended with gains. In the top gainers, information technology jumped over 4%, focused IT added nearly 4% and tech advanced over 3.3%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,999 companies advanced and 969 declined, while 95 remained unchanged. At the National Stock Exchange,
93 companies hit their 23-week high, while 9 hit their 52-week low. और विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपए 28 पैसे दर्ज की गई। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 104.92 पर दर्ज किया गया। विशाल जी, लगातार दूसरे दिन बढ़त बाजार में दिखाई दी है और उससे भी महत्वपूर्ण बात जो अब लग रही है कि थोड़ी जो अस्थिरता थी, इनस्टेबिलिटी थी, वो अब ख़त्म हो रही है। ट्रंप का भी रिजल्ट आ गया है, ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के बन गए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, अब शेयर बाजार में, भारत के शेयर बाजार में एक अच्छा दौर शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए अमरीश जी, शुरुआत इससे करते हैं कि शॉर्ट टर्म में ज़रूर कहा जा सकता है कि जो नेगेटिव में जो मामला चल रहा था स्टॉक मार्केट्स पे, वो अब पॉजिटिव में है। और 2 दिन से जिस तरह का एक मोमेंटम बना है, एक रैली बनी है, उससे ये साफ लगता है कि भाई जो पॉजिटिविटी की तरफ मार्केट को बढ़ना चाहिए वो है। एक लॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन हो रही है बुलिश एटीट्यूड की। अगर बात करें मार्केट एटीट्यूड की, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बेहतरीन जिसे कहा जाए इंडिकेटर है। अब इसके कारणों के पीछे की तरफ जाएं और समझने की कोशिश करें तो देखिए, ये ज़रूर है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे जो हैं उनका काफ़ी असर आज रहा है। और वो असर इसलिए रहा है क्योंकि जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, क्योंकि कांटे की टक्कर अभी तक बताई जा रही थी दोनों ही उम्मीदवारों के बीच, और क्योंकि अमेरिका में जो चुनाव है वो काफ़ी लंबे समय तक उसकी प्रक्रिया चलती है, तो वो अनसर्टेनिटी जो है मार्केट्स पर भी, केवल भारतीय बाजारों पर नहीं बल्कि अमेरिकी बाजारों पर और यूरोपीय बाजारों पर भी देखने को मिल रही थी। और कई एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कहा भी है और लिखा भी है, लेकिन उससे समझा जा सकता है एक थोड़ा लाइटर वेन में अगर समझने की कोशिश करें तो, कि रिपब्लिकन्स का एक स्लोगन था इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की टीम का, कि ट्रंप विल फिक्स इट। तो ऐसा लग रहा है कि शेयर बाजार में वो जो ट्रंप विल फिक्स इट का जो डायलॉग है वो रेजोनेट कर रहा है। एटलीस्ट आज के जो नतीजे हैं शेयर बाजार में, जो नतीजे देखने को मिले हैं, वो उनसे यही लगता है। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर जो 47वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो किस तरह की आर्थिक जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनको परस्यू करते हैं, और उनका असर फिर केवल अमेरिकी बाजारों पर नहीं बल्कि बाहर जो दूसरे बाजार हैं, चाहे यूरोपीय बाजार हो या भारतीय बाजार हो, उस पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में राहत की सांस ली जा सकती है और शॉर्ट टर्म में इसको बड़े ही पॉजिटिव तरीके से देखा भी जा सकता है। So Vishal, please help me understand short term. What do you mean by short term in this context? See, what I mean by short term in this context is because we will also have to look at other factors. The other factor is that, yes, for the past 2 sessions, the market is growing exponentially. 900-point increase is not a small increase. Almost 3,000 companies, listed companies saw an increase in their share prices today, which again is a huge number. But then FPIs are still withdrawing. Foreign portfolio investors are withdrawing the money. Yes, we have a very good cushion in terms of domestic investors. The DIIs are, putting their best foot forward. And if you look at the October data as well, which I was talking about in the previous shows, if you look at the October data, the DIA has provided a very wonderful cushion to the, FIIs pull out from the stock market. I'll go into the reasons as well quickly. The reason why FIIs are pulling out is because of a simple fact that, the other markets seem to be very lucrative for the foreign investors. By other markets, I mean specifically the Chinese market. There has been, a lot of push by the Chinese government in terms of, providing incentives, putting back their economy on track. And another very important factor is the evaluation of companies. Again, coming back to the Indian stock markets, and when you're saying short term, the reason why I'm saying short term is because concerns have been raised for almost few months now. I would say in the entire second quarter, about the evaluation of the companies listed on the Indian stock markets. And this is not a worrisome phenomena. This is not a new phenomena as well. We've seen in the markets, correction phases. Right. So this was a correction phase. When we saw markets coming down, it was basically a correction phase. It usually happens, in cycles in stock markets. Evaluations go up
and when they reach a particular point, then there is a correction phase as well. Then the market settles down, market comes down slightly, the evaluations gets tempered down to a certain extent, and then the investors again come back. But the good point and the very important point and a strong point about the Indian economy and the Indian stock market is that the fundamentals are very strong. The reason why fundamentals are strong is because of the economic policies. That's one. Because of two, the regulators doing their job perfectly well, even in tumultuous situations which we were witnessing throughout the world in terms of geopolitics, in terms of stress on the oil prices, in terms of stress on the dollar value or the rupee market value as well. But the regulators are doing their job perfectly fine. So are the economic policies. The RBI's monetary policy stand is also a very important contributor to that, because again, overall economic scenario, when we look at that, the inflation becomes a very big issue in the overall growth trajectory, be it the economy or be it the stock market. So therein comes the fundamentals. If the fundamentals are strong, then the domestic investors will have their faith in the market, and the domestic investment portfolio in the Indian stock markets has been growing at a very, very continuous and a fast pace. This is, brought us that cushion, which I was earlier referring to, in terms of dealing with the withdrawal of investments by the FIIs. FIIs are going to find lucrative corners elsewhere as well. They're going to come back to India or Indian stock markets, and then perhaps they can move out again whenever they find. Look at the example of Japan. When just a few months back there was a huge FII withdrawal of investments from Japan. Now they're moving back slowly to the Japanese, stocks. So clearly, as far as FII is concerned, there's a different mindset through which they work. But if you want to look at the strong fundamentals of the Indian stock market or the Indian economy, let's look at the way the DIIs are behaving. And the DIIs are behaving in a very positive manner. The DIIs are behaving in a very, very significantly, cushiony manner, I would say, to try and deal with the situation which occurs because of the withdrawal of the FIIs from the market. Right. So just a few points here. The FIIs are still very heavily invested. They have just moved a part or a small percentage, and people are saying from 8 to 10%. That's it, which in a corrective phase is a movement that is not really very worrisome. No, it is not at all worrisome. All right. It is not at all worrisome. That is why I said that this is a correction phase. And is it over, the correction phase for the Indian market? I would say it is partially over. Okay. Because correction phase is not attributable only to one factor. It can't be just attributable to the over-evaluation of the companies. Correction phase is attributable to a number of factors which involves the geopolitical concerns, the geopolitical factors, elsewhere political issues as well, outside India political issues as well, inside India the government's economic policies as well, the behavior of the or the response of the regulators also. So when we look at these check boxes, everything is ticked right. For example, the economic policies ticked right. The behavior of the regulators ticked right. Fundamentals of the economy ticked right. As far as the geopolitical situation is concerned, question mark, because there is a lot of tussle which is still going on between in West Asia, between Israel and Iran. Then on the other side, between Russia and Ukraine, the conflict is yet to come to an end. Right. But when we look at the political stability of the major economic powers, then those concerns which were there, or those I would say that feeling of I wouldn't call it instability, but I would say feeling of anxiety which was there over the US presidential elections, that seemed to have come to an end today, either this way or that way. Now the United States of America has a new president. There will be a new policy which will be in place for the next 4 years. So there is a direction which is going to come. Today was not a reactive this thing, but market की चाल यही I would होती call है. it partially reactive. Okay. मार्केट की चाल देखिए हमेशा वही रहेगी. मार्केट की चाल किसी एक फैक्टर से एक पर्टिकुलर सेशन के लिए बदल सकती है, एक सेशन में आधे दिन के लिए बदल सकती है, कुछ घंटों के लिए बदल सकती है, लेकिन केवल एक फैक्टर से मार्केट की चाल पे कोई बहुत दिनों तक असर रहेगा, ये संभव नहीं है. लेकिन विशाल, बावजूद इन सारी चीज़ों की जो आपने अभी जानकारी दी, अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए
की कीमत लगातार क्यों घट रही है? देखिए, अब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अगर हम रुपए की कीमत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें और उसको देखें और समझने की कोशिश करें तो केवल उसमें भी एक फैक्टर नहीं है या दो फैक्टर्स नहीं हैं। आप जब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि भारत जो आयात करता है वो आयात कहाँ कहाँ से आते हैं, वो आयात किस करेंसी में भारत उनको पे करना चाहता है। और हाल फिलहाल में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रही है, खासतौर पे हमारी जो सबसे बड़ी निर्यात की वस्तु है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, यानी कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स जो हैं, ऑयल एंड गैस जो है, उसके लिए हमने डॉलर के अलावा भी और रेवेन्यूज ढूंढे हैं। तो वो एक अलग इंटरनेशनल लेवल पे करेंसीज की टसल चल रही है, जिसमें मेरा मानना यह है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि भारतीय रुपया थोड़ा सा सेकंड राउंड या थर्ड राउंड इस रेस का जो लैप है, सेकंड या थर्ड लैप है, उसमें थोड़ा सा पीछे रह रहा हो। लेकिन जब रेस खत्म होगी तो मुझे लगता है कि भारतीय रुपया अगर अव्वल नहीं तो पहले 3 में तो जरूर होगा। Right. So moving back and wanting something for our listeners, and people have been saying sit on cash, wait. You think investment on dips or in dribbles, or it should happen? What would you advise our listeners? That's the golden rule, Gauraji. Investment is always done on dips. I have a counter question here to make our viewers and listeners understand. All of us buy domestic groceries and all that. Suddenly tomorrow, if the price of one grocery item which we buy every day goes up by say around 20% or 30%, will we go and buy it? Perhaps not, until unless it is very important or Right. maybe the quantity required. But if the price goes down by around 20-30%, won't we think that okay, fine, let's stock up, for maybe future references? The same is in the stock market. If there are dips happening, one should go ahead and make intelligent investment decisions. I'm not saying that if a dip happens, then you buy randomly. You don't buy randomly. But if you're an intelligent investor, and for the investors, I've always said in your show that all investors are intelligent, and the intelligent investors have one quality. That quality is that they do read up, they do understand, try and understand the company portfolio. One should never buy stocks. One should buy companies. Absolutely. Well Buying said. stocks is not the way to play the game in the stock market. Buying companies is the game, and this is something which the wizards of the stock market have time and again pointed out repeatedly, saying, and if you're trying to buy companies and if you try to be an intelligent investor, then if I have my eye on a company A stock, and I'm very, very hopeful and sure that company will perform well in the long run, and if there is a dip in the market and that company A's stock has come down by say even 1% or 2%, I should go ahead and buy it, but only make intelligent decisions. Don't make random purchases at every dip, and don't make random sell-offs as well at every bounce in the market. जी, चलते हैं और आज की एक और बड़ी खबर को लेते हैं। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस आशय के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह एफसीआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मंत्रिमंडल के आज के फैसले से एफसीआई पर ब्याज का भार कम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार पर सब्सिडी का दबाव भी कम होगा। एफसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदती है और खाद्यान्न भंडारण को सुनिश्चित करती है। इससे बाजार में मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है। मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को भी मंजूरी दी। इस बारे में श्री वैष्णव ने बताया कि छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि ये योजना इसलिए शुरू की गई ताकि वित्तीय बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाए। इस योजना के अंतर्गत 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पर सरकार 75% की गारंटी उपलब्ध कराएगी। विशाल जी, आप क्या कहेंगे? दो बहुत ही बड़े फैसले किसानों के लिए और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आप इसको कैसे विश्लेषित करेंगे? देखिए, ये अगर दोनों फैसलों पर नज़र डालें अमरीश जी, तो ये सोशल सेक्टर से रिलेटेड है। और यहाँ मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए पिछले 3-4 बजट पे नज़र डालूंगा और थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा उस तरफ जी कि पिछले 3 से 4 बजट में अगर हम ध्यान से देखें तो सरकार ने 2 चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया है। पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज
द मनी विच इज़ टू बी इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और अदर प्रोजेक्ट्स, यानी कि सरकार कितना पैसा खर्च करेगी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको बेहतर बनाने में। दूसरी चीज़ जहां पर सरकार ने ज़्यादा ध्यान दिया है इन सब बजट्स में, वो है सोशल सेक्टर की तरफ। चाहे वो हम कृषि क्षेत्र की बात करें, उससे जुड़े हुई सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, चाहे महिलाओं से जुड़ी हुई सोशल सेक्टर स्कीम्स की बात करें, या फिर खाद्य सुरक्षा जैसे कानून हैं, या फिर मनरेगा जैसी जो स्कीम्स हैं उनकी बात करें। तो ये जो दो बड़े फैसले हैं, ये बड़े फैसले उस सोशल सेक्टर से रिलेटेड हैं। खाद्य सुरक्षा इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस पॉलिसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू जो सारी स्ट्रक्चर है खाद्य सुरक्षा की, फूड सिक्योरिटी की, वो चलती है। चाहे वो हम फूड सब्सिडी की बात कर रहे हों, चाहे वो हम खाद्यान्नों की उपलब्धता की बात कर रहे हों, चाहे वो हम किसी भी समय पर किसी चीज़ की कमी ना होने देना और कमी की वजह से कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी ना होने पाए, उसकी रोकथाम की बात कर रहे हो, तो वहाँ हर जगह एफसीआई ही काम आता है। हर जगह एफसीआई की बात होती है। और ये जो धनराशि एफसीआई में इन्वेस्ट करने की सरकार ने बात की है, इससे जो पिछले कई सालों से जो मांग चली आ रही थी, बार बार बात हो रही थी कि एफसीआई को और मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी का और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एफसीआई की जो फंक्शनिंग है उसका सीधा फ़ायदा जो लास्ट माइल बेनिफिशियरी है उस तक कैसे पहुंचे, उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो उसमें खर्चा ज़रूर लगना है और वो खर्चा अब सरकार उसमें करने जा रही है। और रही बात दूसरी स्कीम की, तो वो जो वंचित वर्ग जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो विद्या लक्ष्मी स्कीम है वो 8 लाख से कम सालाना जिस परिवार की आय होगी उन परिवारों के बच्चों के लिए है। अगर उन परिवारों के बच्चों को 10 लाख रुपए तक का लोन अगर बैंक से मिल सकता है, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, जिसमें सरकार 75% लोन अमाउंट के गारंटर के तौर पे खड़ी होगी, तो उन बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने में, आगे पढ़कर कुछ बनने में और मदद मिलेगी। और वो अगर मदद मिलेगी तो बच्चे शिक्षित होंगे तो परिवार शिक्षित होगा, और परिवार शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा, और समाज के बाद अगला नंबर देश। इसमें खास बात विशाल जी है कि जो पोर्टल बना दिया है विद्या लक्ष्मी का, उससे सीधे लोगों को, सीधे विद्यार्थियों को लोन मिल पाएगा। और जो बैंक पहले गड़बड़ी किया करते थे एजुकेशन लोन देने में, वो संभावना भी खत्म हो जाएगी। देखिए, वो संभावना तो बहुत पहले उस पर विराम लग चुका अमरीश जी, इसलिए क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस देश में अब लगभग इन सब सुविधाओं के लिए बहुत ही कॉमन हो गया है। बाहर विदेशों में अगर थोड़ा सा नजर डाल के देखें तो उनके लिए शायद ये नायाब चीज होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि कई विदेशी मेहमान जब हमारे यहाँ आते हैं तो वो जब यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं कि इस तरह से भी काम हो सकता है क्या। हमारे मित्रगण जब कभी बाहर देशों में जाते हैं तो उनको आजकल यूपीआई से पेमेंट ना कर पाने की जो है मतलब बड़ी तकलीफ होती है बाहर कई देशों में। तो ये दर्शाता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बहुत आगे तक कर चुके हैं, और उसका सीधा फायदा ये जो लास्ट माइल बेनिफिशियरीज इन सब स्कीम्स की बात हो रही है वहां सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। Absolutely. How fast we get used to the good things in life, the convenient ones. We have also got a story now. The Center and the Asian Development Bank, ADB, today signed a $200 million loan to help upgrade water supply, sanitation, urban mobility and other urban services in Uttarakhand. Speaking on the occasion, Joint Secretary of the Economic Affairs Department, Juhi Mukherjee, said that the project aligns with the Union Government's urban development agenda as well as the Uttarakhand state government's initiatives to enhance urban services, aiming to boost livability and sustainability in cities. The project will enhance transportation, urban mobility, drainage, flood management and overall public services in Haldwani, and also improve water supply delivery in 4 cities of Uttarakhand. और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। उन्होंने श्री अल्बनीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। विदेश मंत्री आजकल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री अल्बनीज का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। Good news for, I think, sustainability. The World Solar Market Report has revealed that global solar capacity soared immensely within the span of the last 23 years, registering global capacity soaring from 1.22 gigawatts to 2000 to 1,418 gigawatts in the year 2023. The report mentioned that manufacturing is set to exceed demand, making solar more affordable. Solar jobs have surged to 7.1 million, and global capacity may reach 7,000
203 gigawatts by 2030. The third edition of the World Solar Report series was released at the 7th Assembly of the International Solar Alliance in New Delhi yesterday. The report focuses on global solar growth, investment trends, technological advancements, and Africa's green hydrogen potential. The latest World Investment Report highlights a global shift towards sustainable energy, with energy investments rising from $2.4 trillion in 2018 to $3.1 trillion by 2024. चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल जान लेते हैं। एशिया के अधिकांश शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 2.2% से अधिक और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.5% से अधिक गिरा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 0.9% गिर गया। बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में जापान के निकेई में 2.5% से अधिक और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.5% से अधिक की तेजी दिखाई दी। प्रमुख यूरोपीय शेयर बाजारों में भी आज उत्साह दिखाई दिया। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुट्सी में 1.1% से अधिक और फ्रांस के कैक में 1% की बढ़त दर्ज की गई। जर्मनी के डेक्स में भी 0.5% से अधिक की तेजी चल रही थी। US stocks ended with gains of over 1% yesterday, led by release of data reflecting strong economy. The Nasdaq Composite climbed over 1.4%, S&P 500 gained over 1.2%, and the Dow Jones Industrial Average added 1%. Vishal, on world global markets and of course the US market, we've seen increase everywhere. This is optimism, or is it again, as we said, market ki chaal? This is expected in different markets, or reactionary? Well, this was expected and reactionary as well at the same time, because I say so, Gaura, because as far as the US markets are concerned, for the past few days, the economic data which has been coming out of the United States has been positive in comparison to what the data has come out in the past 4 to 5 weeks. Now, that seemed to had an impact. Even before the results started coming out, right? Because what we are looking at from the U.S. markets, it's yesterday's some of the yesterday's data as well. So that's indicative. And of course, as far as the European markets are concerned, and some of the Asian markets are also concerned, it is reactionary as well, because that uncertainty which I was talking about, that anxiety which I was talking about, with respect to the presidential election in the United States seems to have come to an end. And once it has come to an end and a decision has been made by the US voters, either this way or that way, irrespective of that fact, the markets have a clarity. The players in the market have a clarity. The investors have a clarity that, okay, fine, Donald Trump seemingly will be the next US president. So if that's the case, we know what his attitude towards various policies are, or spoken word. So perhaps they will make the move accordingly. That is one indicator, and that is why we see this movement happening in the market. As far as the US markets are concerned, tomorrow we might see more positivity, more positive numbers coming in, and this momentum which is now built up, as I was saying earlier, in the short term will continue. Valid point. Uncertainty is, I think, stress is the biggest cause is uncertainty, and I think markets are actually, this is like a sigh of relief, de-stressing. Right, well said. Oil prices slipped today following a surge in dollar amid US presidential election results and more than the forecasted increase in US inventories. Brent crude was trading 1.35% down at $75.51 per barrel. WTI crude lost 1.42% to trade at $70.97 per barrel when reports last came in. और सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 1.18% गिरकर 77,810 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 2.23% गिरकर 92,840 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 1.26% गिरकर 77,515 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं चांदी
₹92,448 प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। विशाल जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और खबरों पर महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Vishal. Before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices continue their upward momentum for second consecutive session. Sensex surges over 900 points. Nifty closes above 24,480. Union Cabinet approves infusion of equity of 10,700 crore rupees in Food Corporation of India. Also approves PM Vidya Lakshmi scheme to provide financial support to meritorious students. And global crude oil prices decline. Brent crude and WTI slip over 1% each. And that's it for today. Namaskar. Market Mantra.